what's up, ninth graders? We are back to Merchant of Venice, Act 1, Scene 3. Act 1, Scene 2, I did over a podcast. But वो इतना मजा नहीं आता मेरे को ऐसा लग रहा है. And of course, the best thing is if I teach you live, but वो भी possible नहीं हो रहा. So this is my only option. I'm here to teach you guys Act 1, Scene 3 today of Merchant of Venice. It's my favorite scene of Act 1. Brilliant है. Because you know, वो जो हर एक के लाइफ में एक मौका आता है, just एक इंसान है जो रोज टपली मार के जाता है, रोज टपली मार के जाता है, टपली मार के जाता है. पर फिर एक ऐसा मौका आता है जब प्रिंसिपल तेको बोलता है, लिसन, इसको मैंने देख लिया तेरे टपली मारते हुए, अब तू क्या चाहता है? क्या मैं इसको स्कूल से बाहर निकालूं? क्या तू चाहता है इसको तू टपली मारे वापस? व्हाट डू यू वांट? तेरे हाथ में है डिसीजन. तो सडनली एक वो पावर फील होता है, यू नो, कि ओके, बाजी पलट चुकी है, अभी पावर मेरे हाथ में है. दैट सेम थिंग इज हैपनिंग विद शाइलॉक. एक्ट 1 is very important because scene 1 में we are introduced to Antonio, scene 2 में we are introduced to Portia, and now in scene 3 we are introduced to the villain, so-called villain. Of course, it's a debatable topic whether Shylock is the villain or is Antonio the villain. I don't know. Doesn't matter also right now. What matters is that right now, technically, he's the bad guy in the book, in ICS. So Shylock is introduced. Bassanio wanted to go to Belmont. Usko Antonio se paise chahiye the. Antonio ne usko paise diye nahi because the nahi uske paas. All his money is invested in the ships. They both have been looking around for money everywhere in Venice, but kisi ke paas 3,000 ducats, which is a huge value, ready sum, kisi ke paas nahi hai. So they have only one person left to ask, and that is Shylock. Now, Shylock is a Jew, and Jewish people back in the day also very rich. And he's also a money lender. They hate Shylock. But right now, they have no other option. So it's strictly business. And that's where my scene begins. In Venice, a public place where Shylock and Bassanio are walking. Shylock obviously is attitude में है, swag में है, because जो बंदा उसको हमेशा गालियां देता है, जो बंदा हमेशा उसको criticize करता है, आज उसी को उसकी need है. However, Shylock doesn't have as much problem with Bassanio as he has with Antonio. But he knows that Antonio के through ही Bassanio आया, और Antonio में इतना ego है कि वो खुद नहीं आया मांगने के लिए, उसने Bassanio को भेजा. So Shylock, he's playing hard to get. My first few dialogues of this scene are all Shylock wasting time. So Shylock बोलता है 3,000 ducats. And Bassanio बोलता है, yeah, what's your answer about it? For 3 months. Yeah, 3,000 ducats for 3 months. दे रहा है नहीं दे रहा है? 3,000 ducats for 3 months. Sir, is well. Okay, जहाँ भी हो मैं बोल रहा हूँ, that in your textbook is well. So Shylock's dialogue, 3,000 ducats, well. And Bassanio बोलता है, I, sir, for 3 months. For 3 months, well. For the which, as I told you, Antonio will be bound. So Bassanio बोलता है, हाँ, ये जो 3,000 ducats है, जो 3 months के लिए I want you to lend it to me, the guarantee जो ले रहा है बंदा is Antonio. For the which, underline the word which over here. Which over here is the 3,000 ducats that I'm borrowing from you. For this amount, Antonio shall be bound. Bound मतलब guarantee. Bound मतलब he'll sign the legal document. So Antonio is guaranteeing that he'll return the money for you. मैं तो निकम्मा हूँ, पूरे Venice में मेरी reputation तो बर्बाद है. So I'm saying Antonio, who is a reputed character, is going to pay you. Antonio shall become bound. Well मतलब Antonio bound. May you stead me? Bassanio बोलता है, may you stead me? May you stead me is will you help me? May is will, stead is help. Will you help me? Will you pleasure me? Pleasure is help again. So may you stead me? Will you pleasure me? मतलब बोल भाई, are you going to help me or not? Shall I know your answer? Tell me your answer. 3,000 ducats for 3 months. Antonio bound. Yes, your answer for that. बोल तो दिया, अभी इतना क्या भाव खा रहा है? बोल ना उसका आंसर क्या है? Your answer to that. Antonio is a good man. Of course he is a good man. किसी और ने तेरे को बोला क्या Antonio is a bad guy? No ना. पूरे Venice में पूछ ले, Antonio is an amazing guy. एकदम चकाचक, एकदम awesome आदमी है. Like ना. See, जब मैं good बोल रहा हूँ ना, it's not good as in nice and bad वाला good. Good as in financially sound. Antonio is financially sound. Antonio is financially secure. ऐसा Shylock बोल रहा है. So Shylock's dialogue is, Antonio is a good man. And Bassanio's dialogue, have you heard any imputation to the contrary? Underline this phrase. Imputation to the contrary. To the contrary मतलब something else. Another opinion. To the contrary मतलब opposite of what you're saying. And imputation मतलब allegation. Like, has someone denied it? So when you say Antonio is a good guy, have you heard anyone say Antonio is a bad guy? Which means obviously Antonio is a good guy, yaar. Oh no. Na munna na. Tu samjha nahi. My meaning in saying that Antonio is a good guy is to have you matlab Bassanio, understand me matlab convince me that he is sufficient. Underline the word sufficient. Sufficient matlab that he has the capacity to pay me back. Now let's understand a basic funda over here, money lending का 101. मेरे को चाहिए 500 रुपए तेरे से. तो अगर मेरे को तेरे से 500 चाहिए, 500 रुपए चाहिए, तो पहले तो तू देखेगा ना कि मेरे पास लाइफ में कभी 500 रुपए हुए हैं कि नहीं हुए हैं. मैं रिटर्न कैसे करूंगा? So you need an assurance कि I have had 500 rupees sometime in my life.
I have the capacity to return your 500. Or if not the money, actual money, I at least have something which is as valuable as 500 rupees or more. So अगर मैं 500 नहीं दे पाया तेरे को, तो मैं वो चीज तुझे दे पाऊंगा. In English, it's called mortgaging. That's how banks give loans. They first check your eligibility. तो Shylock भी यहाँ पे बोल रहा है, I've heard that Antonio is a good man. Good man as in sufficient. Sufficient मतलब financially stable man. Yet, still, his means are in supposition. His mean मतलब his resources are in supposition मतलब at risk. Shylock is now going to criticize Antonio's business sense. Shylock बोलता है, हाँ मैंने सुना है कि एंटोनियो एक रिच आदमी है, स्टेबल आदमी है, पैसे है उसके पास, बट आदमी ना इन्वेस्ट ढंग से नहीं करता है. I've heard that all his resources are at a risk. Now question mark डाल दो वहां पे, लिखो how according to Shylock are Antonio's resources at a risk. How according to Shylock is Antonio's merchandise in supposition at risk. Point number one, he hath an argosy. He hath an argosy मतलब he has a ship. He has a ship bound to Tripoli. Tripoli is a place. Another bound to Indies. Moreover मतलब furthermore, I heard upon the Rialto. Rialto is a bridge. It's the famous iconic bridge in Venice. Back in the day, Rialto used to be the stock exchange. That's where the merchants would gather, discuss stocks, discuss gossip. They would get news about other merchants. So he said, I heard at the Rialto that he has a third. He has a third at Mexico, a third ship heading towards Mexico, a fourth for England, a fourth ship heading towards England, and other ventures and more ships squandered abroad. Squandered, the word squandered is when you carelessly spend. So he has other ventures squandered. Squandered is spread abroad, spread all over. So Shylock is criticizing Antonio's business sense. He says Antonio has not spent his money wisely. All his money is invested in different ships, squandered, wasted all over the sea. He doesn't end it there. He says also ships are nothing but boards. Boards, matlab ships are not ironclad. Ships aren't something that are indestructible. Boards matlab made up of wood. Sailors are men. So wood ships can be destroyed. Men can die. There are water rats as there are land rats. So just the way there are land rats, rats pose a danger to any goods stored in a storage room. Likewise, there are water rats. The way there are land rats, there are water rats. The way there are land thieves, there are water thieves. I mean pirates. As Shylock clarified karta. It doesn't end there. And then there's a peril of waters. Peril matlab danger. Water, wind and rocks. So there are perils in water. There's danger in the water. Wind, storms and rocks as in rocks by itself. Hidden rocks can pose a danger. He says all of this. So in a way he criticized Antonio. And then he concludes saying the man over here is Antonio, is notwithstanding matlab in spite of this. Underline the meaning. Underline the word notwithstanding. Likh lo wahan pe. In spite of all this criticism that I leveled at him, I think the man is sufficient. Antonio is financially stable. I think I may take his bond. वो बोलता है मेरे को लग रहा है मैं ले लेता हूँ उसका bond. I think I should take this bond. And Basani obviously खुश हो जाता है कि अरे मान गया ये बंदा. बोलता है अरे be assured you may मतलब be sure that you may. You should go ahead and consider this bond. And Shylock बोलता है yes, I will be assured. As in I will be sure. I have to be sure before I agree to this. So I will be assured that I may. And that I may be assured. That के आगे लिख दो so that I'm assured, so that I'm sure that I want to go ahead with this bond, I will think as in I will think over it because थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए. Anyway, अगर तू श्योरिटी नहीं ले रहा है तो जो मेन बंदा है जो श्योरिटी लेने वाला है एंटोनियो, वो कहाँ है? So may I speak with Antonio? So that's the wish that Shylock has. Comes as a one mark question. What does Shylock now ask Bassanio? What is Bassanio's reply to it? So Shylock asks Bassanio to see Antonio. He says, may I speak with Antonio? And Bassanio बोलता है अरे of course, if you want to speak with Antonio, why don't you come have dinner with us? Why don't you join us for dinner? Bassanio बोलता है if it please you to dine with us, why don't you come and have dinner with us? And Shylock बोलता है yes. Underline the word yes. वाले को no. This yes is sarcastic. बोलता है yeah sure. Why not? अरे of course वही तो मुझे चाहिए लाइफ में कि मैं तेरे साथ आके खाऊं ना. मैं तो तेरा पोक खाऊं ताकि मैं घर पे आऊं ताकि you can make me smell pork. Pork is pig. Jews can't eat pig. There's a story why. He says yes to smell pork. He's taunting Bassanio that yeah why not? If I come to have dinner with you, you're gonna make me smell pork. To eat of the habitation. Habitation matlab the body in which your prophet, the Nazarite is someone who comes from Nazareth. Okay, that's Christ. So Nazarite ke baaju mein likh do Jesus. Your prophet as in Christians ka prophet as in Christ conjured the devil in. Now that's the dialogue, but the detailed allusion is given on the side. There's a story that Christ cured a madman once by ordering the devil who possessed the madman. He conjured the devil. He removed the devil from the madman and he transferred them into a herd of pigs nearby. Okay, ever since then Jews believe that the devil resides in the body of a pig. इस point पे normally हर साल लेक्चर में एक लड़का ऐसा होता है जो पूछता है सर बट अगर वो डेविल एक वो उस टाइम पे जो हर्ड ऑफ पिग्स थे उसमें गया था तो बाकी पिग्स के साथ क्या तकलीफ है उन लोग को? वो बाकी पिग्स खा सकते हैं, वो वाले पिग को फेंक दो साइड में, बाकी पिग्स को खाओ.
ये चेहरा देख रहा हूँ, दैट इज अ फेस ऑफ अ बैफिल्ड टीचर. लाइक इसका क्या ही जवाब दूं मैं? इट्स अ स्टोरी. पीपल बिलीव दैट pigs are haram for Jews. Okay, they can't eat it, so that's why it's a taboo. Anyway, so Shylock can't eat pork. That's the story. Okay, he says, yeah, I'll come to your house so that you can taunt me and you can make me smell pork. You'll force me to eat of the habitation, the body into which the prophet, your Nazarite, conjured the devil into, and I will buy with you, sell with you, talk with you, walk with you, but I will not eat with you, drink with you, nor pray with. So he says, I have a set of conditions. I'll do all the business that I have to do with you because I have to, but I won't eat with you, drink with you, nor pray with you. फिर वो टॉपिक चेंज करने की ट्राई करते बोलते एनीवे फॉरगेट ऑल दिस, व्हाट्स द न्यूज ऑन द रियल्टो, और क्या खबर है रियल्टो में. एंड दैट्स व्हेन समवन एंटर्स द सीन. एंटोनियो enters the scene now. So Antonio enters and Shylock is like, अरे ये कौन है? Who is he? Comes here. Bassanio immediately खुश हो जाता. This is Senor Antonio. अरे Antonio पाजी आ गया. And Bassanio goes to greet him. Now while Bassanio is greeting Antonio, while he's helping Antonio get off the gondola, he's on a boat. It's Venice. Shylock सोच रहा है. You've seen those एकता कपूर serials ना, जहाँ एक ही घर में सब लोग होते हैं और किचन में कांदा काटते काटते वो बहू सोच रही है, ओह मेरे पास कांदा कटवा रही है तू, तेरे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तेरे कांदे, whatever, she's thinking of some evil plan. But basically वो जो सोच रही है वो ऑडियंस को पता चल रहा है बिकॉज वो जोर से बोल रही है, अदरवाइज ऑडियंस को पता कैसे चलेगा एक्टर क्या सोच रहा है. लाइकवाइज वो यर, अब जो डायलॉग मैं पढ़ने वाला हूँ वो शाइलॉक सोच रहा है, वो बोल नहीं रहा है. इट्स शाइलॉक थिंकिंग, ओके, टू हिमसेल्फ. बट फॉर द ऑडियंस, ऑडियंस को ऑब्वियसली सुनाई देता है बिकॉज वी वांट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन शाइलॉक्स माइंड. सो शाइलॉक असाइड, जब ये वर्ड असाइड आता है, दैट इज शाइलॉक टॉकिंग टू हिमसेल्फ. ओके, लेट्स लुक एट द डायलॉग. सो द फर्स्ट थिंग ही सेज इज हाउ लाइक अ फॉनिंग पब्लिकन ही लुक्स. नाउ इट्स अ गाली. नाउ इट डजंट साउंड वेरी बैड टू अस, बट उस जमाने में दिस वाज अ बैड टर्म. फॉनिंग पब्लिकन मतलब अ रोमन टैक्स कलेक्टर इज नेवर अ गुड थिंग टू कॉल समवन बिकॉज वसूली करते थे वो लोग, पैसे डिमांड कर रहे हैं. राइट नाउ Antonio is the one who needs the money. But the attitude with which he's coming, the smug look on his face, the pride on his face is as if he's come to demand money from me. So how like a fawning, and fawning is a bad word. For Jews also, to call someone fawning is a term of contempt. Contempt मतलब hatred. Bad term. मुझे पता तुम सोच रहे हो, सर मतलब अगर कोई हम लोग को गाड़ी चलाते हुए कट मारेगा तो मैं उसको फॉनिंग बोलाऊंगा तो उसको बुरा लगेगा क्या? नहीं लगेगा. आज के जमाने में फॉनिंग किसी को गाली नहीं लगती है. इसीलिए ना जब कोई तुम्हें गाली देना तो बुरा नहीं मानना चाहिए. बिकॉज आज जो चीज गाली हो शायद 100 साल बाद, 400 साल बाद किसी और को बुरा नहीं लगेगा. उनको लगेगा कि वो ये डेफिनेशन है. लाइक चोमू इज नॉट अ गाली, चोमू ऐसे इट्स अ टर्म ऑफ कंटेम्प्ट. तो अपने को तब नहीं लगेगा 400 साल बाद कि चोमू इज अ बैड वर्ड. हाउ लाइक अ फॉनिंग पब्लिकन ही लुक्स, ही ओवर हियर इज एंटोनियो. नाउ आई हेट हिम पे क्वेश्चन मार्क डाल दो. 3 पॉइंट्स है, 3 मार्क्स. पूरे टेक्स्ट बुक में काफी बार ये सवाल आता है, व्हाई शार्लॉक हेट्स एंटोनियो. अलग अलग सीन में अलग अलग रीजंस दिए हुए हैं. यहां पर एट दिस पॉइंट अगर आरटीसी आया ये वाला एंड दे आस्क यू व्हाई डज शार्लॉक हेट एंटोनियो, सो 3 पॉइंट. फर्स्ट, आई हेट हिम फॉर ही इज अ क्रिश्चियन. जूस हेट क्रिश्चियन, क्रिश्चियंस हेट जूस. साउंड सिमिलर? हम लोग हिस्ट्री से सीखते नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है इंडिया में. एनीवे, पॉइंट नंबर 2, मोर सो बिकॉज इन लो सिंप्लिसिटी, अंडरलाइन लो सिंप्लिसिटी. लो सिंप्लिसिटी मतलब आउट ऑफ स्टूपिडिटी. Okay, because he's an idiot. So low simplicity is because he's foolish. He foolishly lends money gratis. Lends, lets people borrow. He lends money gratis. Gratis matlab free of interest. Now, if you want a loan today, if you go to a bank and you want a loan and Kotak is giving you a loan at 7% interest, but then Yes Bank competition में 5% interest पे देता है. But फिर एक आदमी है, Reliance Bank खोलता है और Reliance बोलता है हम लोग money lend करेंगे free of interest. Interest ही नहीं है. Who do you think people will go to? Everybody's gonna go to Reliance. No one's going to go to Kotak. No one's going to go to Yes Bank. सो रिलायंस आके सबका धंधा बंद करवा देगा. इसमें फायदा किसका हो रहा है? जो लोग लोन ले रहे हैं रिलायंस से. अब रिलायंस ये कैसे मैनेज कर रहा है, क्यों मैनेज कर रहा है, वो किसी को नहीं मालूम है. एंटोनियो भी यही कर रहा था. एंटोनियो इज नॉट अ मनी लेंडर. उसका जॉब इज ही इज अ मर्चेंट. उसका पैसा कहीं और से आ रहा है, बट वो लोगों को ऐसे ही मदद करता था. मसीहा था सबका. ओके, जिनको भी पैसे चाहिए होते थे वो लोग एंटोनियो से मांगते थे. सपोज तूने आज 100 रुपए उससे लिए तो तू 3 महीने बाद भी 100 ही रुपए तुझे उसको वापस देने, तुझे इंटरेस्ट नहीं देना उसको वापस. बट शाइलॉक एंड अदर मनी लेंडर्स, वो लोग को कमाने के लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा. सो इट्स नॉट अ बैड थिंग जब वो लोग इंटरेस्ट लेते हैं. बट लोगों को लगता था कि अरे जब एंटोनियो फ्री में पैसा दे रहा तो हम शाइलॉक को पैसे क्यों दे. सो बिकॉज एंटोनियो फूलिशली लेंड्स मनी ग्रेटिस, ग्रेटिस मतलब फ्री ऑफ इंटरेस्ट. पॉइंट नंबर 3, he brings down the rate of usance. Usance is interest. He brings down the rate of interest in the whole of Venice. If only I can catch him once upon the hip. Now this is not Shylock being romantic. क्या रे यार एंटोनियो के हिप को मैं ऐसे पकड़ लूं. नहीं, this is a term. It's a wrestling phrase. Okay, to catch someone upon the hip is a wrestling move. दंगल का एक मूव है जिसमें एक बंदा एस्केप नहीं कर सकता. So you've caught him where you want him to be. Once I can catch Antonio upon the hip, मतलब if I trap him once, if I trap him in a situation where he can't escape from, मेरे पूर्वज वो बहुत खुश हो जाएंगे. Everybody is gonna be thankful to me कि मैंने
उन लोग के अगेंस्ट जो भी इनजस्टिस हुआ मैंने उसका बदला लिया एंटोनियो से. सो आई विल फीड फैट मतलब satisfy. I will satisfy the ancient grudge, khunnas. Grudge is khunnas. Okay, the hatred that my people have against Christians. I will be the one who will satisfy that hatred. So if only I can catch Antonio upon the hip, I will feed fat, matlab satisfy the ancient grudge, the ancient hatred that I bear him, matlab that I have for him, the hatred that I have for him and his tribe. He hates our sacred nation. He matlab Antonio hates our sacred nation. Unlike sacred nation, Jewish tribe. Antonio hates the Jews and he rails is abuses. वो ऐसे ही बस गालियां देते रहता है, इंसल्ट करता है, अब्यूज करता है, ही रेल्स. और ऐसा नहीं कि अकेले में अब्यूज कर रहा है या रास्ते में कहीं मिल गया तो अब्यूज कर रहा है, वो सब लोगों के सामने अब्यूज करता है, सारे लोगों के सामने में इज्जत का फालूदा करता है वो. कि रेल्स इवन देयर वेयर मर्चेंट्स डू कॉन्ग्रीगेट, मर्चेंट्स डू गैदर. कॉन्ग्रीगेट मतलब वेयर ऑल द मर्चेंट्स गैदर. वहां लिख दो बाजू में रियल्टो. खुली सड़क पे, खुले मार्केट में, सबके सामने वो इंसल्ट करता है. So he rails me, he abuses me where merchants gather. मतलब रियल्टो. रेल्स पे क्वेश्चन मार्क. About what? So आगे keywords. On me, मतलब he insults me in general. My bargain, my business, he insults my business. And my well-won thrifts. And my well-won मतलब वेल डिजर्व्ड थ्रिफ्ट मतलब प्रॉफिट व्हिच ही कॉल्स इंटरेस्ट. मतलब उसको इंटरेस्ट के साथ तकलीफ है तो मेरे प्रॉफिट को वो इंटरेस्ट का नाम देके मेरी इंसल्ट करता है. कर्स बी माय ट्राइब इफ आई फॉरगिव हिम. मतलब लालत है मुझ पे अगर मैंने इसको फॉरगिव किया तो आज तो चांस मिला मैं इसको जाने नहीं दूंगा हाथ से. ठीक है, उतनी देर में एंटोनियो एंड बसानियो हैव कम टू शाइलॉक. ये पूरी चीज उसके सिर में हो रही थी, उसके माइंड में. मतलब वी कैन हियर हिज थॉट्स राइट नाउ. ही इज नॉट सेइंग इट टू एनीवन. ऐसे शाइलॉक एक्साइट हो रहा था क्योंकि किसके बारे में सोच के, एंटोनियो की मैं ऐसे ऐसे वाट लगाऊंगा, उसको कचुम्बर बना दूंगा, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसे छोड़ दूंगा उसको. ये सब उसके शाइलॉक के मन, सारी आवाज उसके मन में आ रही है तो वो एकदम खुश हो रहा था. उतनी में बसानियो आता है एंटोनियो के साथ. बसानियो देख, हेलो शाइलॉक, ओ भाई सुनते हो? So Shylock, do you hear? Like, hey, are you with us? And Shylock goes, what? Oh, sorry. I was just thinking about the total. I am debating of my present store. Present store मतलब the money that I have with me in hand. 3,000 ducats. मैं सोचा मैं कबर्ड में कितना पड़ा हुआ अभी पैसा. And by the near guess of my memory, मतलब if I think of the top of my head, I don't think I can instantly raise up the gross of full 3,000 ducats. The line means I'm just debating how much money I have with me, and by the near guess of my memory, मतलब a close guess of my memory, I don't think I have 3,000 ducats lying around. Like पूरा का पूरा 3,000 नहीं होगा, शायद ऊपर नीचे कुछ हो सकता है. But what of that? What of that? मतलब doesn't matter, dude. Chill. Tubal is a character. Okay, अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं इसके बारे में. Soon you'll see him in Act 3, Scene 1. You'll see the guy Tubal. अभी सिर्फ उसका नाम ले रहा है. So Tubal, a wealthy Hebrew of my tribe. Hebrew is a Jew of my tribe. मतलब ऑफ माई कम्युनिटी. सो जूस में भी जैसे गुजराती में वैष्णव होते हैं, वैष्णव पार्ट 2 होते हैं, वैष्णव पार्ट 3 होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं. सो वैसे ही इन जूस आल्सो देयर आर कम्युनिटीज और सब ट्राइब्स. सो ट्यूबल, अ वेल्दी हिब्रू ऑफ माय ट्राइब, विल फर्निश मी मतलब विल टेक केयर ऑफ माय नीड. बट सॉफ्ट मतलब, बट वेट, हाउ मेनी मंथ्स डू यू डिजायर? मैं भूल गया क्या बोला तो कितने मंथ्स के लिए तेरे को चाहिए? ओ एंटोनियो सर, सलाम, कैसे हो सर? तो शब्जी और शब्जी, सॉरी अभी आपके बारे में ही बात कर रहे थे हम लोग. तो एंटोनियो को रिस्पेक्ट दिखाता है, फॉल्स रिस्पेक्ट, मॉक रिस्पेक्ट. रेस्ट यू फेयर सिनियर एंटोनियो. रेस्ट यू फेयर सिनियर एंटोनियो मतलब हे व्हाट्स अप एंटोनियो. योर वर्शिप मतलब यू वाज द लास्ट मैन, मतलब वी वर जस्ट talking about in our mouth. So the line means you were the last person we were just talking about. In simpler language, we were just talking about you. Antonio is very mean, very snobbish, arrogant है. आके काम की बात चालू करता बोलता Shylock, albeit is although I neither lend nor borrow by giving or taking of excess. Underline the word excess over here. This word excess is interest. Shylock, although I neither lend nor borrow by taking or giving interest, yet to supply the ripe wants, underline ripe, urgent, wants मतलब needs मतलब wants, the ripe wants, the ripe needs of my फ्रेंड को सर्कल करके लिखो बसानियो. सो शाइलॉक, नॉर्मली मेरा उसूल है कि मैं ना पैसे देता हूं ना लेता हूं इंटरेस्ट पे, फिर भी बसानियो को अब भी अर्जेंटली पैसा चाहिए, इसलिए मैं मेरा उसूल तोड़ रहा हूं. आई एम विलिंग टू ब्रेक अ कस्टम. सर्कल द वर्ड कस्टम, क्वेश्चन मार्क डाल दो वहां पे. व्हाट कस्टम डज एंटोनियो फॉलो? व्हाट वी जस्ट रेड अबाउट. फिर वो बसानियो को देखता है एंटोनियो एज अ शाइलॉक बस ऐसे ही है वहां पे, इनसिग्निफिकेंट बंदा. बोला गया तू इसको कितना चाहिए पैसा तेरे को? टू बसानियो, इज ही येट पोजेस्ड? ही शाइलॉक, इज शाइलॉक येट पोजेस्ड मतलब इन्फॉर्म्ड? हैव यू इन्फॉर्म्ड शाइलॉक हाउ मच मनी यू वांट? इज ही येट possessed of how much ये मतलब you. So ये को सर्कल करके लिखो बसानियो. would मतलब want. So have you informed him how much money you want? And Shylock बीच में खुश करने के लिए बोलता है yes sir, he told me 3,000 ducats. और एंटोनियो बोलता है and for 3 months, did he tell you we needed for 3 months? Yes, I forgot. मैं अभी तो पूछा उसको. Yes 3 months बोला उसने मुझे. You told me. Well then, you're born. Let me calculate.
ऐसे शाइलॉक कैलकुलेट कर रहा है। लेट मी सी, वैसे एंटोनियो अभी अभी तो बोला यू नीदर लेंड नॉर बोरो अपॉन एडवांटेज, अंडरलाइन एडवांटेज। पहला वाला वर्ड यूज किया था एक्सेस, सेकंड वर्ड यूज कर रहा है एडवांटेज, बोथ ऑफ द वर्ड्स मीन इंटरेस्ट। तो शाइलॉक उसको कांडी कर रहा है, बोलता है एंटोनियो अभी तो बोला वैसे यू डोंट लेंड नॉर बोरो बाय टेकिंग इंटरेस्ट, एंड एंटोनियो बोलता है या आई डोंट एवर यूज इट। इट को सर्कल करो, इट ओवर हियर इज इंटरेस्ट। शाइलॉक बोल रहा है कैलकुलेट करते करता, यू नो एंटोनियो व्हेन जेकब ग्रेज्ड अंकल लबान्स शीप, दिस जेकब बाय द वे, क्योंकि इतने सारे जेकब्स है दुनिया में, तो मैं कौन से जेकब की बात कर रहा हूं? दिस जेकब द वन आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम आवर होली Abraham. Now at this point kids normally tend to get very confused. I would advise you to circle the names. Jacob को circle कर, लबान को circle कर, दो कैरेक्टर्स हुए, तीसरा कैरेक्टर Abraham. Now before we move ahead from this point, क्या हो रहा है पहले समझ लो। शाइलॉक ने एंटोनियो को बोला, एंटोनियो तू मेरे को बोला कि you don't lend nor borrow upon interest, and एंटोनियो बोलता है हाँ मैं कभी लेता नहीं हूँ। तो शाइलॉक बोलता है तूने कभी सोचा है कि जेकब और लबान जब साथ में काम कर देते हो, जेकब कुछ बोलने जाता है और एंटोनियो उसको टोकता है, बोलता है क्यों, जेकब भी इंटरेस्ट लेता था क्या? शाइलॉक बोलता है ना स्टोरी सुन पहले, और शाइलॉक उसको एक स्टोरी बोलता है ऑफ जेकब एंड लबान। उसमें जेकब कौन है उसके लिए वो जेकब का इंट्रोडक्शन देता है, दैट जेकब इज द थर्ड सक्सेसर ऑफ Abraham. Abraham कौन है उसका एल्यूजन भी बाजू में दिया। सो यू इन ऑल नीड टू नो who Abraham is, who Jacob is, who Laban is, what Laban and Jacob's story is, and why is Shylock saying this story. So why Shylock says this story is because he's trying to justify to Antonio that taking interest is not bad. In fact, interest is a blessing from God. ये Shylock justify करने की try कर रहा है, giving an example of a story from the Bible. Okay, so ये जो Jacob and Laban की एक story है जो मैं करवाऊंगा, आज नहीं कर रहा हम लोग, मैं आगे करवाऊंगा, आज हम लोग यही तक कर रहे हैं। So next recording when I teach you from here onwards till the end, I'm gonna tell you the story. But the point of the story is Shylock tries to justify why interest is not bad. All right, we are done with literally half the scene, and half the scene is left. I'm going to finish it in the next recording. Until then, stay safe, stay cool. I'm very happy. I've got 1,000 subscribers on YouTube, which is amazing. I know for other people it's not such a big deal, but for me it's small beginnings. I love it. I love it. It's amazing. And so thank you, everybody. If you still haven't subscribed to my channel, please do it. If you don't understand something, as usual, as I always say, you'll ask me in my next Zoom lecture. If you are not with me already, you can comment below. Okay, if you like how I teach, also let me know. We can all do with some good comments right now. It makes you feel good when someone appreciates your work. So thank you, everybody, and take care. Stay safe. Love you guys. Good night.